chocolates or sweet, irritability better by talking, extreme thirst for large quantity of cold water. Large quantity of cold water we see in fluoric acid. If you open fluoric acid, you will get it. Fluoric acid has aversion to coffee also. Let's see fluoric acid. We'll go to fluoric acid. You can open fluoric acid in your boric. Fluoric acid open करो. स्क्रीन दिखा फ्लोरिक एसिड वाला. अब देख. See, you can see the desire. Craves cold water and hungry. This sentence is very important for fluoric acid. Confirmed in many cases of fluoric acid. ये अंडरलाइन कर लो फ्लोरिक एसिड के लिए. ये पूरा स्टमक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरिक एसिड. मैं पढ़ रहा हूँ, शांति से पढ़ रहा हूँ. उसको स्क्रीनशॉट ले लो, घर जाके फ्लोरिक एसिड पढ़ना, स्टमक चैप्टर खोलना, फ्लोरिक एसिड स्टडी करना बेटा. आज फ्लोरिक एसिड पढ़ना आप लोग सब. स्टमक चैप्टर, हैवीनेस एंड वेट इन स्टमक, हीट इन स्टमक बिफोर मील. Heat in stomach you will get in Calotropis also. Calotropis भी खोलेंगे 2 मिनट के बाद. Sour adaptation, averse to coffee, wants fancy dishes. मम्मी को क्या बोलेगा? अरे कुछ अच्छा बनाओ ना. क्या ये बोरिंग कुछ बना रहे हो? कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ. This will always, this fluoric acid patient will tell you fancy dishes, Mexican, Italian and all that. एक डिशेस पे नहीं रहेगा. वड़ा पाव, सबवे, और क्या क्या होता है? पिज्जाज. पिज्जाज इज यू विल सी इन स्टोंचियम कार्बोनिक, बटर मिल्क स्टोंचियम कार्बोनिक, चीज स्टोंचियम कार्बोनिक. Stomach symptoms relieved by tight clothing. See, this is the reverse of lachesis. Stomach symptoms relieved by tight clothes. Even sepia, no? Sepia doesn't like tight. This is how the fluoric acid is reverse of sepia. Desire for highly seasoned food, you will see impar sulfuricum. The syphilitic. काठियावाड़ी लोग ना मरचा खाएंगे. काठियावाड़ गए कभी? नहीं. गोंडल गए? गोंडल, राजकोट गोंडल जाए देखना, वो लोग खाएंगे. Craves cold water and hungry. Warm drinks produce diarrhea. Warm drinks problem is sanguinuria candidiasis. Now we go to the Calotropis. Calotropis. अभी आप बोरिक में कैलोट्रॉफिस देखो. साथ साथ में हम बोरिक को भी सीख रहे हैं. कैलोट्रॉफिस जाइजेंटिका, बोरिक मेट्रामेडिका. आ गया? दिख रहा है बेटा? Heat in stomach is good guiding symptom. My God. इसको अंडरलाइन करो बोरिक में. वेद अंडरलाइन करो. Heat in stomach is good guiding symptom. Obesity with flesh decrease. Muscle become harder and firmer. My God. और ये सेंटेंस कैलोट्रॉपिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ. Why it is important? Because in white spot, सफेद दाग है ना, vitiligo, or it is also called albino because when the vitiligo is generalized, it is called albino. Now, what is the use of Calotropis? The Calotropis will increase the circulation of skin, has powerful effect on the pseudorophics. Pseudorophic is what? What is pseudorophic? वो आपका होमवर्क है, आप लोग को ढूंढना है. What is pseudorophic? In the
the secondary symptom of syphilis where mercury has been used but cannot be pushed safely any further. And it rapidly recruits the constitution, heals the ulcer and blotches from the skin and perfects the cure. सुपर, इसको अंडरलाइन करो, लिखो. वापस बोल रहा हूं मैं, ये जादू सेंटेंस दिया हुआ है कैलेट्रॉफिस में, वापस पढ़ रहा हूं. इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द स्किन and powerful effect as a sudorific in the secondary symptom of syphilis where mercury has been used but cannot be pushed safely any further. It rapidly recruits the constitution, heals the ulcer. अभी अल्सर वाला देखा था ना, क्या पढ़ा था? सिम्फाइटम देखा था. डिओडिनल अल्सर. उधर भी आप डिओडिनल अल्सर में कैलोट्रॉफिक लिखो, कैलोट्रॉफिक को सिम्फाइटम में लिखो, तो अल्सर वाला कॉमन हो जाएगा आपको. Blotches from the skin and perfects the cure. ऐसा बोरिक ही लिख सकता है. प्राइमरी एनीमिया ऑफ सिफिलिस. So anemia which is primary, secondary is psychosis. Secondary anemia is psychosis. Primary anemia of syphilis. Heat in stomach is good guiding symptom. Heat in uterus, the remedy is lapis alba. So we'll open lapis alba again. Lapis alba. Lapis alba form boric. So lapis alba इसको शांति से पढ़ते हैं. Affection of gland, goiter, pre-ulcerative state of carcinoma. So it is pre-ulcerative stage of carcinoma where we can use Lapis alba. Burning, stinging pain in breast, stomach, and uterus. Connective tissues of our gland especially affected. Fat, anemic body, babies with iodine appetite. My God, iodine appetite is bulimic appetite. So yes, go on eating. Ravenous appetite. Remarkable successful in Staphylococcus affection except in malarial case. Uterine carcinoma. Fibroid tumors with intense burning through the part with profuse hemorrhage. इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दो. उधर कैलेट्रॉफिस लिख दो. कैलेट्रॉफिस क्या लिखो? वेरी लिख लो. कैलेट्रॉफिस in the stomach and lapis alba in uterus. This is how we should remember our boric maternity. Fibroid tumors with intense burning pain through the part with profuse hemorrhage. Glands have certain elasticity and pliability about them rather than stony hardness of calcareous floor and cystis. This is how the boric gives you differential diagnosis. How beautiful it is. So remember, lapis alba in goiter cases, pre-ulcerative cases of cancer, and fat anemic babies with iodine appetite. When you see iodine type of constitution, and iodine patients are very restless, they are ADHD child. We see a lot of cases in Pune, Bal Kalyan Sanstha by Dr. Sarkar teach them very nicely. Again, we'll go to the again. Now, edema of face and eyelids, menses scanty and copious, commencement of flow worse, hot application. Hot application emulates the dysmenorrhea. The remedy is arsenic album. We can open arsenic from boric. आज बोरिक सेशन हो जाएगा लगता है. ठीक है, चलो. बोरिक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट. आर्सेनिक आल्ब ओपन करो. आर्सेनिक आल्ब ओपन करो, बोरिक में जाओ. शायद फाटक में है, लेट्स सी.
Hmm. We'll go to Phatak, which is very clearly given by Phatak. Hmm. Last sentence of female. फाटक फाटक ओपन करो बेटा. फाटक होना चाहिए. मटरा मेडिका शंकरन सर काफी प्रमोट करते हैं. एंड इट इज गुड रेमेडी फॉर कैंसर ऑफ यूट्रस एंड डिस्मेनोरिया बेटर बाय हीट. ये अंडरलाइन कर लो. आज आपको घर जाके पढ़ना है आर्सनिकल फीमेल वेल. एंड ऑल माय स्टूडेंट हु इज लिसनिंग, आर्सनिकल फीमेल पढ़ना है. ये पूरा पढ़ लो. प्रोफ्यूज एक्रिड येलो थिक यूट्रस वर्स स्टैंडिंग पासिफिलेटस कैंसर ऑफ यूट्रस burning in ovarian region, pressive stitching pain in ovary into side which feels numb and lame, worse in menorrhagia with black blood, burning in mammae, better by motion, increased sexual desire at menstruation, like stemonium, Buddha stemonium liquid, menses suppressed in weak, tired, careworn woman, stitching in rectum during menses and dysmenorrhea better by heat. This is important. You can use as an acute arsenic in a constitutional problem. सपोज कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया का आपका है और पेशेंट बोल रहा है कि सर मेरा डिस्मेनोरिया है ना, वो गर्म चीज से ही अच्छा होता है, तो गिव आर्सेनिक एज एसओएस. समझ में आया? हेलो. Yes. हेलो. गुड. Yes, sir. सो व्हेन यू Yes, आर sir. Yes, sir. taking any constitutional drug like calcarea phos, calcarea, phosphorus, use arsenic as an acute in dysmenorrhea better by heat, and definitely you will get result. अभी तो एक भी मदर टिंचर पूरा नहीं किया. बहुत कुछ है अभी. These are all the history of Abroma Augusta. Abroma Augusta is good, painful dysmenorrhea. It is used. Try करके देखो. It क्या लिखा है देखो. It has never failed in my hand, especially for relieving painful dysmenorrhea. कितने जन ने यूज किया है Abroma Augusta? Painful dysmenorrhia. Yes, बेटा. अभी यूज किया है. यूज करके देखो. Use this mother tincture. डॉक्टर एवर्स ने लिखा है कि it has never failed in my hand, especially for relieving painful dysmenorrhea. These are all the research. और क्या रिसर्च है देखो आप. The name of Abroma Augusta was in Indian Homeopathic Review in 1919. Dr. Sarkar of Dhaka observed existence of sufficient magnesium salt. तो याद रखना कि मालवेलेस में मैग्नीशियम आता है. चॉकलेट में ज्यादा क्या होता है? मैग्नीशियम. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैग्नीशियम इज गुड फॉर हाइपरटेंशन ऑल्सो. इस बेसिस में मैंने एक हाइपरटेंशन को मैक कार्ब दिया. आपको बिलीव नहीं होगा, 190 उसका प्रेशर, मैक कार्ब 200 दिया, 140 हो गया उसका तुरंत एक डोज से. एंड नाउ शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ लाइक एनीथिंग. पेशेंट का नाम भी मैं बोल सकता हूँ. इट इज can't disclose the name of a patient. Completely relieved with मैक कार्ब. So I understand. I am now used. जैसे कल हमने पढ़ा परसों. Dr. Chopra and Dr. Ghosh and Dr. Musa found this resin, fixed oil and carbohydrate and alkaloids. This is important. ये underline कर लो. So magnesium and Abroma and Malveles, they are very touchy people, quarrelsome, insomnia, empty sensory, extreme thirsty, nocturnal analgesis, gets up several times in night to urinate like carbolic acid.
menstrual disorder, dryness, sunlight and heat aggravation, like bryonia. It is very similar to bryonia, cucurbitaceae. Crave sweet, extreme thirst for cold drinks, weak-sighted, giddiness, hardness in hearing in diabetes patient. See, diabetes patient, hardness in hearing. Absence of sexual desire for exhaustion after coition cures almeria with high specific keratin, skin disease of diabetic patient. My God. Skin complaints में भी cover करता है. कितना polycrest remedy है, and we are missing. I'll show you now the repertoire of Abroma Augusta from Adonis. This is Adonis. Skin share work in a share. Now we'll read Abroma Augusta, repertoire, Adonis. So right. Anger. Then comes complaining. अभी बहुत ध्यान रखना है आपको, अपना पूरा माइंड अभी कॉर्नर सर्सिनेटस की तरह कंसंट्रेट करना है. कॉर्नर सर्सिनेटस. और कॉर्नर सर्सिनेटस क्या है वो मैं आपको आगे बोलूंगा. एंगर, कंप्लेनिंग. एब्रोमा अगस्टा आर कंप्लेनिंग पर्सन्स. Concentration difficult, excitement very excitable. This is all the repertoire of Abroma Augusta. Irritable, irritably talking emulation, irritably talking while, joy, laughing immoderately, laughing trifles, mental exertion, mood changeable, quarrelsome. See, very important, quarrelsome. Quarrelsome like polycarbonic. Polycarbonicals are very quarrelsome. Are very quarrelsome. Then comes vertigo. Vertigo morning, nausea, standing, walking ambulation. Walking ambulation in vertigo cases. Now this is very heaviness, closing the eyes ambulation. You can even read alloy also. Heaviness, noise, heaviness, warm room, head air, head pain, closing the eyes ambulation. ये भी underline कर दो. Head pain, heat of sun aggravation. These are all pains of Abroma Augusta. See, forehead, occiput, temple. अपनी रेपर्टरी में इतना सारा सिम्टम्स दिया हुआ है एब्रोमा ऑगस्टा. सिर्फ डायबिटीज नहीं है, इसमें बहुत कुछ है. मार्बलेस से जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा. हैवीनेस आईब्रो देखो. अभी इसके साथ में एक एलॉय करके एक ड्रग है, वो आप वापस समझाते हैं. एलॉय बोरिक खोलो वापस. एलॉय सकोट्रीना बोरिक. बोरिक ज्यादा हो रहा है ना. बोरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग. प्लीज ओपन बोरिक. The last sentence of head. Headache above forehead with heaviness of eyes, must close them. Boric, 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 head. Aches about forehead with heaviness of eyes, must fastly close them. Or first few sentence of generalities. An excellent remedy to aid in re-establishing physiological equilibrium after much dosing, where disease and drug symptoms are much worse. We can use nowadays because too many drugs are being employed. Diabetes, BP, thyroid. We should start this L-Socotrin. The good rubric for L-Socotrin is fraternized. Fraternized sensation. Fraternized sensation. अगर आप एडोनिस में जाओगे, एलॉय रेमेडीज, एलॉय फ्रेटरनाइज सेंसेशन.
कौन बोला है? शेयर, अच्छा ओके। वेट वेट, इधर गया, इधर। सी, we are seeing Adonis alloy, एंड एलॉय का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंड सिम्टम, ये दिख रहा है सबको? फ्रेटरनाइज विथ होल्ड वर्ल्ड, द ओनली रेमेडी इज एलॉय। माय गॉड, ब्रदरहुड सेंसेशन भी बोलते हैं इसको। सब मेरे भाई है, वसुदेव वसुदम देवम कंस चाणु नमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलो उसको सॉरी, ऑडियो नहीं। क्या? कृष्ण, वंदे जगत गुरु। So we come to the fraternize with the whole world, then brotherhood sensation। शेयर करता हूँ, आ गया ना? I show you brotherhood sensation. It is also called fraternized sensation or brotherhood sensation, where the alloy secretina is a very good remedy for nowadays. And the alloy patients are dictatorial, power love of those patients who love power, those politicians who loves power. This is a remedy for politicians also. It can be remedies for many politicians. It has lot of disgust. It has dreams of toilets also. And this alloy is a good remedy for allergic constitution metal to silver. The only remedy is alloy. J Vyakti, those person who are allergic to silver metals, not gold, but silver. If it is gold, this is pituitary anterior. Anterior pituitary patients are allergic to gold ornaments. दिख रहा है ये एलर्जी कॉन्स्टिट्यूशन मेटल टू सिल्वर? से यस, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
आई सिम्टम हो गया, एब्रोमा एगस्टा, विजन आ गया। ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी इंपॉर्टेंट मोडेलिटी इज आई क्लोजिंग एंड वर्स इन सन, प्रेशर एमुलेशन एंड हीट। हेयरिंग impaired, this is the discharge of nose discharge. Dryness of lip, very important symptom of abroma augusta. Mouth, tongue clean, like ipecac. Salivation, spit with constant desire to, like epiphagus, in headache. This is the repertory of abroma augusta. Thirst accompanied by lips dryness, cold water desire for large quantities. Rectum itching, anus around bathing. Itching anus around bathing. Bladder symptom. See urine frequency. Leukorrhea. Lot of leukorrhea symptoms. Cough. Expectoration. Stiffness lumbar region. कितना lumbar region का symptom है देखो तो सही. Abroma augusta. Stiffness lumbar region working from cold water in. The only remedy is abroma augusta. कितने केस होंगे? आपकी मम्मी ये काम करती होगी तो ये सिम्टम आएगा ही. लिखो एब्रोमा ऑगस्टम, स्टिफ लंबर रीजन वर्किंग फ्रॉम कोल्ड वाटर. अच्छा, कोई मम्मियां तो वैसे काम करती नहीं है, काम वाली को तकलीफ हो तो दे. मम्मी आजकल काम नहीं करती, काम वाली सिंड्रोम है. पेन, लेग्स, प्रेशर एमुलेशन. माय गॉड, सी एब्रोमा ऑगस्टा, कैशियासोफोरा. Cassiosopora is excellent remedy again for osteoarthritis. Dreams, see, just see the dreams of abroma augusta. They are all vivid dreams. Witness days of, like Brahmania. Thirsty being, सपने में भी वो थर्स्ट देख रहा है. तो ये पेशेंट के अंदर थर्स्ट एसेंस के अंदर है. स्किन बर्निंग है. अभी मैं आपको जो जनरलिटीज बता रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा. इसको स्क्रीनशॉट ले लो. डायबिटीज अकम्पनीड बाय कार्बनकल्स, डायबिटीज अकम्पनीड बाय वाइट लुकोरिया, eosinophilian remedy like Glyceria glabra, Glyceria glabra, Glyceria glabra, eosinophilia के. Coffee desire, cold drink water, coffee, aversion to influoric acid, aversion coffee, coffee influoric acid. Juicy things desire, fish desire, salt desire, sour food acid desire, sweet desire, tea desire, warm desire, warm drinks desire. Tobacco aversion to his accustomed cigar. Weakness stool after, weakness urination after. Sun exposure to sun. अभी तो एक ही मदर टिंचर किया है. सी द रेपर्टरी ऑफ एब्रोमा ऑगस्टा. प्लीज डोंट अंडरलाइन मत करो स्क्रीन पे. हैव रिस्पेक्ट फॉर द ऑथर्स. Now we have completed just one mother tincture now. Now we are moving to another mother tincture, that is Calmag, Androgaphis paniculata. Calmag is also called Chirata. Androgaphis paniculata ऐसा दिखता है. See, this is the plant classification. It is plantae, phytophytes,
angiosperms, Udicot, Asterales. Asterales is subclass. Who will tell me subclass? 6. Subclass 6, Lamiales, Acanthaceae, Androcaphis, species Acanthasis paniculata. Large quantity of potassium salts. This is very important. So in patient who show you low levels of potassium, in CKDs also you can prescribe. CKD patients. In 1914, Dr. Bhaduri shows that the leaves contains 2 bitter salts substance and traces of essential oil found in alkaloid and glucosides. Second, he found amorphous form called calmate. Clinical symptom of calmate. Jaundice due to endurance of liver and gallbladder, also in splenomegaly. Worms. Forceful nature does not want to speak. Scabies. This is the repertory of Androcaphis paniculata. Androcaphic families paniculata patients are absent-minded. There is a lot of anger issues, forgetful, memory weakness of memory, sadness, stupor, taciturn like natrum uraticum cases, vertigo, heaviness of head, discoloration tongue, white. So in Calmette you will get white discoloration. So this is clinical observation of Calmette cases from the repertory Adonis. Then what I want to emphasize then regeneration of liver, fatty degeneration of liver, enlarged liver. आज कोई भी सोनोग्राफी रिपोर्ट में फैटी डिजेनरेशन लिखा ही होता है, कोई भी रिपोर्ट देख लो आप. So Calmette can be indicated, and it is good drug for enlarged liver in children. Enlarged spleen. Inflammation of liver. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है Calmette Androcaphis paniculata. सबसे इंपॉर्टेंट है. Diarrhea alternating with constipation. Very good drug for amoebiasis. बहुत सारे केसेस आते हैं amoebiasis के. गांव से आते वाले पेशेंट you will get lot of amoebiasis cases. White discoloration is the clinical observation of Calmette cases. Then this discoloration of fat or degeneration of fatty liver, बहुत सारे cases you will get. And diarrhea alternating with constipation. These 2-3 symptoms are very important for Calmette prescription. और plant classification भी बताया मैंने. This is 2 of mother tincture complete. Now we'll move to the third. That is Syphilendra indica. My God, what a drug it is, Syphilendra indica. From the Cucurbitaceae family. This is the Syphilendra indica plant. Syphilendra indica history. Syphilendra is from the family Cucurbitaceae. Dobbins and Corlett said that Syphilendra indica has blood sugar reducing and blood sugar increasing principle. क्या दिया हुआ?
It contains enzyme and traces of an alkaloid. Dr. W.C. Datta advocated the drug was used in diabetes. So there is an indication in diabetic cases with burning sore. आगे आएगा. Cifalendra is a drug of choice. What is the clinical pointers of Cifalendra indica? Burning sensation of body by cold. Sore burning is very important. Without this, there is no Cifalendra indica. Dryness of the mouth that we see even in Abroma. So differentiate कैसे करोगे? Abroma is from Malvaceae family, and this is from Cucurbitaceae. And Cifalendra indica is from Cucurbitaceae or the Bryonia family. There is a lot of giddiness, weakness of head, discharge of excessive urine, annoyed and cannot concentrate. DM with peripheral neuropathy. कितने केस होते हैं? Peripheral neuropathy, you can use Texas Bacata. Texas Bacata. Then comes carbonyl sulf. Carbonyl sulf. And then comes glycerinum. Glycerinum. Then comes heloderma. Heloderma थोड़ा देखना जैसा है. So open heloderma, boric. Heloderma, boric. The extremities of heloderma, numbness and trembling, cyanosis of hand, coldness, sensation as if walking on sponge, as if feet were swollen. कितने पेशेंट बोलते हैं, इसको अंडरलाइन करो. डायबिटिक पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मैं स्पॉन्ज के ऊपर चल रहा हूँ. Sensation as if walking on sponge, as if feet were swollen. Heloderma. Staggering gait, Cox gait. When walking, lifts feet higher than usual. This is very important. Again. Staggering gait we'll see in Manganum aceticum. Puts down heel harder. Feet cold as ice or burn. Stretching relieves pain in muscles and ribs. अभी मैंगनम में जाओ. Now open Manganum. Manganum. Manganum aceticum. Please open Manganum aceticum. Boric mater medica.